Hello dear students, today we are going to start a new topic from English grammar, which is the noun numbers. So if we are talking about numbers in noun, then we are referring to countable nouns. That means the nouns which we can count, which can be counted in numbers, right? So countable nouns have two numbers, which is singular and plural. काउंटेबल नाउन्स ही ऐसे नाउन्स होते हैं जिन्हें हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में काउंट कर सकते हैं, 1, 2 या एक से ज़्यादा या बहुत सारे, राइट. सो काउंटेबल नाउन्स कैसे होते हैं? इसके टू नंबर्स कौन से हैं? आइदर इट इज़ सिंगुलर और इट इज़ प्लूरल. या तो सिंगुलर होते हैं या फिर प्लूरल होते हैं. सिंगुलर क्या होता है? इट डिनोट्स वन पर्सन, प्लेस और थिंग. इट डिनोट्स ओनली वन पर्सन. बस एक ही डिनोट करता है वो. सिंगुलर में बस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन person, place or thing, then we are referring to a singular noun. And in plural noun, the plural noun denotes more than one person, place or thing. Okay, जहाँ पे हम एक की बात करते हैं, we are talking about that is singular noun. And जहाँ पे हम एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, मतलब वो है plural noun. Let's see some example. Boy is a singular noun. Boy, लड़का, एक. हम एक लड़के की बात कर रहे हैं. Boys, लड़के. That means there are more than one boy. Fine. So similarly, carpenter, teacher, house, village, book, pencil, etc. These are singular noun, singular countable noun. And boys, carpenters, teachers, houses, villages, books, pencils, these are plural nouns. Now, there are certain rules of changing singular nouns to plural nouns. Singular nouns get transformed into plural nouns, but they have to follow certain rules. If we are talking about regular plurals, regularly जो plural, normally जो generally plurals बनते हैं, वो कैसे बनते हैं? सिंगुलर नाउन में हम एस वर्ड ऐड कर लेते हैं. सिंगुलर नाउन प्लस एस, लाइक काउ becomes cows, टॉय becomes toys. अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं that ends with ch और x और s और ss. So when we change them into plural noun, they require es to make their plurals. For example, watch, which ends with ch, it becomes watches, ches. Box, boxes. Bus, buses. Class, classes. Next is noun that ends with a vowel plus y. It takes the letter s. Vowel plus y. Vowel are a, e, I, o, u. These 5 alphabets are known as vowel. a, e, I, o, u. इन 5 अल्फ़ाबेट्स को कहा जाता है वावल. सो कुछ वर्ड्स हैं, कुछ नाउन हैं जो कि वावल प्लस वाई से एंड होते हैं. क्ले, बॉय, वे. सो ये इस टाइप के वर्ड्स जो होते हैं, इस टाइप के नाउन जो होते हैं, जब हम उनका प्लूरल लिखते हैं या प्लूरल यूज़ करते हैं तो उसमें एस वर्ड ऐड करना होता है, एस अल्फ़ाबेट ऐड करना होता है, एस लेटर ऐड होता है. सो लाइक बॉय बिकम्स बॉयज, वे बिकम्स वेज. Apart from this, there are few nouns that ends with consonant plus y. अभी तक हम बात कर रहे थे vowel plus y की. अब consonant, that means all the other letters, all the other alphabets apart from vowels, a, e, I, o, u को छोड़ के बाकी जितने भी alphabets हैं उन्हें हम कहते हैं consonants. तो कोई भी noun जो end हो रहा है consonant plus y से, तो जब उसका plural हम लिखते हैं तो वहाँ पे y drop हो जाता है, y रिमूव हो जाता है एंड उसकी जगह लग जाता है IES. लाइक बेबी बिकम्स बेबीज,
fairy becomes fairies. Noun that ends in o. अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि ओ से एंड होते हैं. अब वहाँ पे ओ जो है ओ के साथ ई एस ऐड करना होता है हमें प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए. लाइक हीरो बिकम्स हीरोज, टोमेटो बिकम्स टोमेटोज. अपार्ट फ्रॉम दिस सम नाउन्स, ये सभी के लिए नहीं है, देयर इज सम एक्सेप्शनल केस ऑल्सो, लाइक अ फ्यू नाउन्स which ends with O takes only S. अभी हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे जहाँ पे कुछ नाउन हैं जो कि ओ से एंड हो रहे हैं, लेकिन वो जब हम उनका प्लूरल लिखते हैं तो ई एस यूज़ करना होता है. सो वी हैव few noun as well which ends with O, but it takes only S. Like kangaroo becomes kangaroos, photo becomes photos. Now we have few nouns that ends with F or FE. कुछ नाउन हमारे ऐसे भी होते हैं जो कि F या FE से एंड होते हैं, तो उसे चेंज करने के लिए यूजुअली जो साउंड है, जो F है, F या FE, ये रिप्लेस होता है V से एंड इट टेक्स ES और S. Like knife becomes knives, leaf becomes leaves. But there is some exception like giraffe. If you see giraffe FE से एंड हो रहा है, पर इसका जब हम प्लूरल लिखते हैं तो हम लिखते हैं giraffes, FES. Roof becomes roofs, cafe becomes cafes. Next is conversion of compound nouns. कुछ होते हैं compound nouns, like उसमें दो words साथ मिलके एक particular meaning form करते हैं. So यहाँ पे होता है base word and head word. One is known as the base word and the other one is known as the head word. So by adding S, कंपाउंड नाउन्स को जनरली जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसमें एस ऐड करते हैं आइदर ऑन दी हेड वर्ड और ऑन दी बेस वर्ड. लाइक टेनिस शू बिकम्स टेनिस शूज, मदर इन लॉ बिकम्स मदर्स इन लॉ, कमांडर इन चीफ बिकम्स कमांडर्स इन चीफ. यहाँ पे अगर आप फर्स्ट अल्फ़ाबेट देखें, फर्स्ट वर्ड देखें, दैट इज फर्स्ट कंपाउंड नाउन टेनिस शू, उसका फर्स्ट वर्ड है, that is the base word and the other one shoe is the head word. So उसे हमने जब प्लूरल में कन्वर्ट किया है तो S वर्ड यूज़ हुआ है कहाँ पे, हेड वर्ड के साथ. S लेटर यूज़ हुआ है हेड वर्ड के साथ, राइट. लाइक टेनिस शू बिकम्स टेनिस शूज. नेक्स्ट इज वर्ड्स विदाउट बेस वर्ड. जहाँ पे बेस वर्ड है ही नहीं वहाँ पे क्या करते हैं, देर लाइक एग्जाम्पल्स लाइक ग्रोन अप, वहाँ पे इरेगुलर वे में अपनी मर्जी से वो प्लूरल बन जाते हैं. लाइक एस इज एडेड इन इट्स ओन वे. ग्रोन अप बिकम्स ग्रोन अप्स, गुड फॉर नथिंग बिकम्स गुड फॉर नथिंग्स एंड हायर अप बिकम्स हायर अप्स. नेक्स्ट इज अबाउट इरेगुलर प्लूरल्स. There are several nouns जो कोई rules follow नहीं करते हैं, which do not follow any rule and they have irregular plurals. Like fish remains fish in plural. When we are talking about one fish, we use the word fish. When we are talking about more than one fish, then also we use the word fish. Foot becomes feet. Man becomes men. Similarly, woman becomes women. Child, children. Mouse, mice. So these are examples of irregular plurals. Certain plurals which have a different singular, which do not follow any rule, which do not require any rule. Now we have some foreign nouns as well. Some nouns which we have borrowed from
foreign languages. For example, amoeba. So in a foreign plural, it will take an e to make its plural form, but in English plural it takes as s. Like फॉरेन नाउन्स में क्या होता है कि फॉरेन प्लूरल बनने में वो एक ई अल्फ़ाबेट यूज़ करता है, और जबकि एक इंग्लिश प्लूरल बनने में वो एस अल्फ़ाबेट यूज़ करता है. लेट्स सी एन एग्जांपल टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस. द फर्स्ट एग्जांपल इज amoeba. Its foreign plural is amoebae, B-A-E, but its English plural is amoebas. Similarly, antenna becomes antennae, and in English plural it becomes antennas. And lastly, formula becomes formulae, and in English plural it becomes formulas. Some nouns end with s, us, us. They take a, I or es to form the English plural. Like cactus becomes cacti in foreign plural, and in English plural it takes es. That means cactuses. Cactus foreign plural में बनेगा cacti, C-A-C-T-I, and English plural में ये बनेगा cactuses. It takes es ऐड हो रहा है इसमें. ओके. रेडियस फॉरेन प्लूरल में ये होगा रेडाई, R-A-D-I, and in English plural it is used in the similar way. Similarly, syllabus becomes syllabi, and in English plural it becomes syllabuses. Next is there are few nouns that ends with ex or ix. ex या ix से एंड होते हैं, लेकिन जब हम उनका प्लूरल फॉर्म लिखते हैं तो वहाँ पे ऐड होता है ices या फिर es. जैसे अपेंडिक्स, TIX अपेंडिक्स, वो चेंज हो जाता है अपेंडिसिस. जो x है x ड्रॉप हो जाता है एंड उसकी जगह पे ऐड हो जाता है CES. But in English plural it becomes appendixes. Same appendix ES ऐड हो रहा है उसमें. इंडेक्स जब फॉरेन प्लूरल में फॉर्म होता है it takes indices, it becomes indices, and in English plural it is indexes. We just add ES at the end of the word. Now we have a few nouns that ends with IS. So this IS it changes into ES. Like axis, it in plural form it becomes axis, OSS, emphasis. ये जो foreign plural है यही English plural में भी use होता है. This foreign plural is also used in English plural. So lastly we have few nouns which ends with on. So this on it changes into a. Like criterion changes to criteria, for phenomenon changes to phenomena, criterion to criteria, and phenomenon to phenomena. Okay, so we have few nouns which are exceptional to all the rules, to everything. Like they are always singular. We don't either they have s at the end or they never take s at the end, but they are always used in singular form and plural form. Like news, economics, they have s at the end, but they are always singular. They can be used in both singular and plural. Like news, if we are talking about news, either we are talking about one news or
10 news, we use the word news. Fine. So these nouns, they never get converted, they never get changed. Similarly, luggage. If we are talking about one luggage or we are talking about 10 luggage, we use the word luggage. Information is always they never take s. अगर हम एक इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो भी हम इन्फॉर्मेशन वर्ड ही यूज़ करते हैं. अगर हम 10 इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो भी हम इन्फॉर्मेशन वर्ड ही यूज़ करते हैं. वहाँ पे हम इन्फॉर्मेशंस कभी यूज़ नहीं करते हैं. दैट इज़ रॉन्ग. इन्फॉर्मेशन इज़ ऑलवेज प्लूरल. फर्नीचर whenever we are talking about furniture, घर का कितना भी फर्नीचर हो, हम फर्नीचर वर्ड ही यूज़ करेंगे, फर्नीचर्स नहीं यूज़ करते हैं. दैट इज़ रॉन्ग. ग्रामेटिकली इट इज़ रॉन्ग बिकॉज फर्नीचर इज़ ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म. इट नेवर टेक्स एस. कभी भी वो एस ऐड नहीं करता है अपने साथ टू फॉर्म इट्स प्लूरल फॉर्म. ऑलराइट स्टूडेंट्स, I hope the topic is clear and we have so many examples in our textbook. So let's read the textbook. Let's see more and more examples. The more we read, the more grammar is clear to us. So thank you everyone and have a great day ahead.